There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. The mother of democracy is not in good shape. Harassment by tax or legal authorities has become common for government critics, for independent media, for academics, think tanks, and even civil society groups. इससे पहले कि you start typing in the comment section, चुब्बे कांग्रेसी, नक्सल, anti-national, let me clear one thing. ये सब मैं नहीं कह रही. This is what the British daily Financial Times had to say about India this week. ये बिल्कुल झूठ का दस्तावेज है. चलो, ये अंग्रेज लोग का तो काम ही है. They are jealous of the papa of the mother of democracy. ये गोरा लोग, ये सब हमारे खिलाफ है. Which is why the V Dem Democracy report of 2024 has categorized India as an electoral autocracy. Which means कि इंडिया में elections तो हो रहे हैं, but major institutions that keep democracy alive, like the media, judiciary, investigative agencies, all these institutions have started to resemble more like they do in autocracies. Something like this. At which he won 14 gold medals. Meanwhile, गोरे लोग ही नहीं, अपने देश के लोग भी ये सब बोल रहे हैं हमारे बारे में. क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए. ये ध्रुव राठी फिर आ गया एक और नए वीडियो के साथ, saying that we are turning into a dictatorship. सब मिले हुए हैं जी, फाइनेंशियल टाइम्स से लेके वी डेम रिपोर्ट से लेके ध्रुव राठी तक सब मिले हुए हैं. या फिर it's time to do a little pre-election chintan. In less than 2 weeks, India will vote for who will get to govern us for the next 5 years. And the big question everyone seems to be asking is how free and how fair will these elections be? Let's just focus on one small aspect of free and fair elections in a democracy. A free and fair media. That is an important component of free and fair elections in a democracy. भाड़ में जाए दोस्तों, ये नया भारत है. A free and fair media where journalists question the ruling party on their performance. कि भाई पिछले 10 सालों में आपने किया क्या है? We need a media that questions those in power. सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड. कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है. गया फ्री एंड फेयर मीडिया पानी में. Nehru wanted to give up parts of the country. अर्नब, फ्री एंड फेयर मीनिंग करंट प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछो, पुराने वालों से नहीं, नेहरू से नहीं. Ask questions of the current prime minister like Katchatheevu. You look so pretty in this veshti. Lovely. You just have to look at how Modi made an entry in this interview. We'll come back to this interview again. Meanwhile, थोड़ा और देख लो कि free and fair में क्या चल रहा है. Media is in a position where it gets beaten up regardless. If we ask you questions, you beat us up. If we don't ask you questions, the opposition beats us up. So we are quite used to being beaten up. Opposition beats you up? Yeah. I don't. Nirmala ji is telling free and fair Navika कि भाई प्रेस फ्रीडम, वी गिव यू सो मच ऑफ इट. हम तो जर्नलिस्ट को कभी कुछ नहीं करते. ये ऑपोजिशन वाले हैं जो मीडिया वालों को पीटते रहते हैं. वी हैव नॉट जेल्ड एनीवन. वी हैवंट स्लैप्ड एनीवन विद एनी टेरर चार्जेस. इट्स द ऑपोजिशन दैट बीट्स यू नविका. एंड फ्री एंड फेयर नविका just smiles and says, you just. None of us do. I mean, do we beat the media? No way. Navika couldn't remember what happened to her own journalist, of course, and couldn't respond to Nirmala Tai beyond, you just. क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे. क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके हैं. क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया. What a free media. Just like Brij Bhushan, despite all those serious allegations against him. Bro didn't even hesitate. Now, I am going to come back to this bro later, but you guys don't hesitate to like this video and also share it with your friends and family across all your WhatsApp groups. Do it now, like this video. स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. Because You got to pay to keep the news free.
Now, on to the topic of mainstream television media and how free and fair it is. Like I said, a free and fair media questions those in power. Except, it's not the sort of questioning we saw this week. Prime Minister, you have exhibited a great penchant for Tamil culture, unlike most of your predecessors. You connect so well with Tamil Nadu and Tamil culture. What would you say is your most favorite thing about Tamil Nadu, sir? Is it the language, culture, khana? Or is it the Tamil voters you want to get? You have to tell us, sir, what is your favorite Tamil food? वाह वाह, बिल्कुल रूबिका सुधीर और दीपक चौरसिया टाइप एनर्जी आ रही है, बस थोड़ी सी कमी रह गई। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, ये पत्रकार के सवाल है कि पीआर कंपनी के सवाल है? Now to give Thanti TV the credit, they did eventually muster up the courage to ask Modi about electoral bonds. Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? To this question, Modiji gave the most amazing answer of all times. ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, आज आपको ट्रेल मिल रही है थैंक्स टू मोदी। एक होता है कॉन्फिडेंस, फिर होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और उसके आगे होते हैं मोदी जी। ये मोदी थकता क्यों नहीं है? मोदी की वजह से हम इलेक्टोरल फंडिंग ट्रेस कर पा रहे हैं। Are you saying, Modi ji, that you brought electoral bonds for transparency? Because your finance minister seems to disagree with you on this. That time, confidentiality of the donor was given in the law. Confidentiality was given in the law. So who was the one who wanted the donor list to be made public? Who wanted transparency? Was it Modi ji? The court wanted that to be disclosed. It has been disclosed. Yes. It was the Supreme Court, not the Supreme Leader, that wanted the list of donors to be made public. The official stance of the Modi government, in fact, in court was this. Citizens don't have right to know source of funding. Government tells Supreme Court. The Supreme Court wanted to bring transparency in electoral bonds. The Modi government scheme on electoral bonds had secrecy baked in it. सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट इतना लताड़ना पड़ा एसबीआई को कि भाई डेटा दे दो, कर दो पब्लिक डेटा, थोड़ा काम कर लो, एंड हियर मोदी जी इज गोइंग अराउंड टेकिंग द क्रेडिट फॉर इट. बट डिड द एंकर्स काउंटर क्वेश्चन मोदी जी ऑन दिस क्लेम? नहीं, बिल्कुल नहीं. इंस्टेड दे जस्ट सैट देयर nodding their heads like obedient little kids, free and fair little kids. With the media that doesn't question the government on such a key issue, this will become the truth on the basis of which Modi ji may even win elections. मोदी ने देश के लिए पूरा पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ला दिया, इसीलिए हम मोदी को लाएंगे. Don't be surprised if a section of voters actually say this while voting. आप लोग रोना बंद कीजिए. बट ठीक है, we get Thanti TV एंकर्स का डायलेमा थोड़ा बहुत. मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं आफ्टर ऑल. Ambut alive are minded, and so there may be some hesitation in countering him on his baseless claims. But what about his ministers? उनसे तो फ्री एंड फेयर मीडिया टफ क्वेश्चंस पूछ ही सकती है without any fear. What is it to work with the Prime Minister? How has your experience been? आपका अनुभव कैसा रहा? आपके लिए युवा का मतलब क्या है? Does your boss give you free time because all of you are campaigning on weekends? You're busy every Saturday, Sunday. You don't have a weekend off. At one point, Anurag even gave Maria cues. Ask me a tough question, please. Ask me. आप मुझे एक आरोप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाओ भ्रष्टाचार. एक बता दीजिए. An investigation by the Indian Express reveals a pattern in corruption probes being stalled once an opposition leader joins BJP. Basically, जब तक आप opposition में हो तो corruption charges झेलो, जेल जाओ, BJP join कर लो तो आपका अमृत काल शुरू. तो एक counter question तो बनता ही था in response to Anurag. Does the BJP का boss have no role in getting corrupt leaders on board? Even if there's no allegation of corruption against Modi, Modi is principally okay with Bhrashtachar, no? Once Bhrasht leaders join the BJP? That's a question. Instead, Anurag Thakur is given a full platform to accuse all opposition leaders as corrupt. जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज ऐसी लड़ाई लड़ी है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए जा रहे हैं. क्या कांग्रेस इतनी व्यस्त और मस्त रही कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाई?
तो क्या करना चाहिए? देश के कानून से ऊपर कांग्रेस को रखते हैं? क्या देश का कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अलग से बना दिया जाए? एक बीजेपी के नेता या फिर आपके अपने अलायंस के किसी नेता के बारे में बताइए जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो। बहुत सारों के होता है, लेकिन अगर हमने किया ही ना हो तो हम किस बात क्या करेंगे? हमने तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं। मारिया जी एक इंस्टेंट दीजिए एंड देन फ्री एंड फेयर मारिया डज दिस। एक आरोप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाओ भ्रष्टाचार, एक बता दीजिए। चलिए ऑडियंस सवाल पूछेंगे सर। चलिए ऑडियंस से सवाल पूछ लेते हैं। लकीली द किड्स इन द क्राउड वर देयर टू सेव द डे। और आपने इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स की बात की जो जेल में है, कृपया मुझे ये प्लीज बताइए कि उन सब में से ट्रायल कितने का हुआ है और जेल विदाउट ट्रायल कितने हैं? Now that's what you call good journalism. Don't let the mantri get away with making sweeping accusations and baseless statements. From the audience questions, I am happy to say the kids are quite all right. As there is no internal complaint committee, so my question is that how the government and you as a union ministers of the sports has taken any steps in this regard? हम काफी सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे बहुत गर्व ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो सब बायस्ड हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक यूएन के इंडेक्स को हम क्यों बोलते हैं सही है और दूसरों को क्यों बोलते हैं गलत है। Over the next 5 years, what measures are anticipated to bolster job opportunities and foster gender equality amongst youth? Just wait for the answer. जहाँ तक महिलाओं की आपने बात कही, bro didn't even hesitate. Bro didn't even hesitate? क्या अनुराग जी, वो कन्विक्शन नहीं था आपकी इस पंच लाइन में, अनलाइक योर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। Aha, that's what you call a crowd response. गोली मारो, सालों को। Unlike this. Bro didn't even hesitate. Stick to your core competence, Anurag ji. Even the kids recognize your expertise in it. Sir, if you come in 2024, as you have always known for raising voice against the gaddars, so will you be doing anything in this respect where the party or a candidate turns gaddar? Voice against the gaddars. देश के गद्दारों को। Full props to this guy. You get a round of applause from Team Newsance. एक तरफ मारिया से बेहतर सवाल उसकी ऑडियंस में बैठे बच्चों ने पूछ लिए, तो दूसरी ओर सुधीर को तो स्ट्रेट अप फैक्ट चेक कर दिया बच्चों ने ऑन स्टेज। The kids are getting quite smart these days. विपक्ष ना हो तो सारे लोग क्या कहेंगे? भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए कि आज हमारा कद कितना बढ़ गया कि हमारे कहने पर हमने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा दिया। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता? Obviously. लगता? पर आप सच में रुकी होती तो। हाँ, तो वही है। Priceless. Just priceless. And so we have to watch it again. विपक्ष ना हो तो सारे लोग क्या कहेंगे? भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए कि आज हमारा कद कितना बढ़ गया कि हमारे कहने पर हमने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा दिया। ऑपोजिशन से कोई फैक्ट चेक नहीं करता तो कोई इशू ही नहीं होता। सुधीर, मोदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई कोई वॉर नहीं रुकवाई पापा ने, बट वो छोड़ो, ऑपोजिशन नहीं होता तो कितना अच्छा होता। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता? Obviously. लगता? पर आप सच में रुकी होती तो। सुधीर इज लाइक, आपके पापा ने वॉर रुकवाई होती तो आप कितना खुश होते? Why can't we be happy when our papa stops the war? The girl actually laughs at this suggestion and then says, सच में रोकी होती तो खुश होती कि भाई सुधीर जी ये सच में नहीं हुआ है तो एवं ही क्यों पापा पापा लगे हुए हो? It took a girl to say that. सच में रुकी होती तो। हाँ, तो वही है। वही है। This is the situation of Indian media, that news anchors are getting schooled by kids. At least we can hope that the future is in good hands. Present का नहीं पता। यहाँ पर सवाल पूछना तो दूर की बात है, anchors are slowly transitioning into full-on spokespersons for the ruling party with no shame whatsoever. प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। I will defend the prime minister of my India.
Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt of course. It's understandable why Rubika is going an extra mile here. After all, Bharat 24 पे she had 2 primetime shows. Her 9 PM show was even called Rubika Liaquat Show. She was the face of her channel. मैं निष्पक्ष नहीं हूँ. News 18 में आके बिचारी she is facing a tough competition from Gullu and Aman. अब तो बस 5 बजे का स्लॉट दिया हुआ है, तो एफर्ट तो डालना ही होगा, क्योंकि गुल्लू के शो में ये सब चल रहा है 7 बजे. तो कहते तुम लालू का गोबर हो, बिना दांतों की औरत. Now, when the media in this country is not talking about how great the dear leader is, and when they are not busy not asking him no questions, they are also busy bashing long gone governments. Katchatheevu. 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 अब बोलेंगे ये कहां से आ गया? ये था भारत का पार्ट था. An island that Nehru effectively shrugged his shoulders on. केंद्र से लेकर नेहरू तक भारत ने क्या क्या गवाया, कब कब गवाया, कितना गवाया. नेहरू जी को पसंद नहीं था, इसलिए शायद दे दिया. You're a weak man. What kind of an agreement from Nehru to Indira Gandhi where islands were gifted away to Sri Lanka? It seems that Prime Minister Nehru went against some of the legal officers and the foreign service officers. Nehru gave Aksai Chin to China, Indira gave Katchatheevu to Lanka, Rajiv gave Rahul to India. No, but seriously. इस देश की सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली के 2 प्रधानमंत्रियों ने इस जमीन के टुकड़े को खैरात की तरह दान कर दिया. Would they be able to do this in Italy? पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. It's election time and Tamil Nadu will vote in the first phase of the election. BJP leader Annamalai is contesting and the BJP wants to register its presence in Tamil Nadu beyond single digits. So Annamalai comes up with an emotional issue. Congress and DMK gave up Bharat Mata ka island to Sri Lanka. See, we have an RTI response that shows how this island was just given away to Sri Lanka. This RTI response makes it to TOI and then all anchors pick it up. And then Modiji expresses shock कि Indira Gandhi gave India's land to Sri Lanka. Oh my God! Oh my God! In reality, there's nothing new or startling about this island being given to Sri Lanka because in return, Sri Lanka also gave up something. Its claim on a patch of land to the south of Kanyakumari. Now you must remember that the islands and the territories in the Indian Ocean that we're talking about were always disputed from the British times. To solve this dispute between India and Sri Lanka, Indira Gandhi's government decided to let Sri Lanka have Katchatheevu because it was not of much strategic importance to us. And in return, we got full rights on the Vaj Bank area, which is one of the world's richest fishing grounds. Till today, it sustains the livelihood of countless fishermen in Kerala and Tamil Nadu. One more thing, this patch is also rich in fossil fuel and in January this year, the Modi government invited bids for oil and gas exploration in this area. Wow, kya scene hai. So neither Modi nor Jaishankar are ignorant of the fact that Katchatheevu was given up. But they didn't say that it was given up in return for something. So a non-issue becomes an election issue thanks to the media. Lazy journalism. Meanwhile, none of these anchors will ask BJP कि भाई China जो border पे कर रहा है उसका क्या? Many people in Ladakh have complained about Chinese soldiers stopping them from taking their sheep into pasture lands that they used to go even 2 years ago. That's not ceding, I guess. आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता. The situation is so bad that today we have to look at Subramaniam Swamy to ask questions of Modi government. The Chinese are nibbling away at will Indian territory from Arunachal to Ladakh. All that Modi is doing is showing his Laal aankh to koi aaya nahi aur hum gaye nahi. Waiter in suit boot is importantly squealing. He should be reposted as acting ambassador in Beijing. एक जमाना था जब स्वामी जी अर्नब के शो में बिल्कुल रेगुलर होते थे. Now no more. I wonder why. I think you are now mentally retarded if you ask me. And guess what? In a free and fair media setup, it wouldn't take the highest court of the land to stop Ramdev from giving false and misleading ads. The media would have done its job and called out Ramdev. और बात कोर्ट तक नहीं पहुंचती. राष्ट्र के प्रति समर्पित ये एक ऐसे योद्धा हैं जो सालों से लगातार इस देश को जागरूक कर रहे हैं. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है.
और बधाई इस रामबाण के लिए, स्वामी रामदेव का ये रामबाण है कोरोना के खिलाफ। So why are people prejudiced just because he's a saffron Baba? और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। तो पहला हमारा क्लिनिकल जो है केस स्टडी था, वो इंडिया टुडे में भी पूरा प्रकाशित हुआ। कॉलिंग आउट रामदेव तो बहुत दूर की बात है, मीडिया वाज हेल्पिंग रामदेव स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। ये हाल है मीडिया का। एंड व्हेन वी कॉल देम आउट फॉर नॉट कॉलिंग आउट रामदेव, दे टुक अस टू कोर्ट। इट्स अ फ्री एंड फेयर कंट्री, आई गेस, बट जस्ट थिंक अबाउट हाउ फ्री योर मीडिया इज। इन्होंने मजाक बना के रखा है खबरों का, न्यूज चैनलों का। इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए। Atul and I are going to be on the road very soon to cover elections. So do check out another election show, which is going to be with you very soon. In fact, we have our first episode that will release next week on Wednesday. So check it out. Remember, you can support our coverage by logging on to newslaundry.com, going to the NL Sign Up page. That will help you fund our another election show. Choose an amount that's convenient to you and support us. We don't take any advertisements from governments, corporations or Ramdev, which is why we're able to do free and fair reporting and media critique and media analysis. So please log on to newslaundry.com, subscribe to us and help us keep going. Thank you so much guys for watching this episode. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.